Good morning, students. Today I am going to explain you chapter number 9, Hydrogen, Part 1. And the electronic configuration of hydrogen is 1s1 because it contains only one electron. The position of hydrogen in periodic table, and the position of hydrogen is not fixed in the periodic table, and it is not justified because it resembles both with alkali metals as well as halogens. हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाइड नहीं है बिकॉज ये अल्कली मेटल और हेलोजन दोनों से ही इसका रिजेम्बलेंस है. Now, resemblance of hydrogen with alkali metals. Electronic configuration of hydrogen has only one electron in its valence shell, and alkali metals also have one electron in valence shell, and both hydrogen and alkali metals form unipositive ion. अल्कली मेटल और हाइड्रोजन दोनों ही के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और दोनों ही यूनी पॉजिटिव आयन वन पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद. हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल both show +1 oxidation state, and they also are the रिड्यूसिंग एजेंट. ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, एंड दे बोथ हैव एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल Na2O, NaCl, H2O, HCl एट्सेट्रा. दोनों में ही हेलोजन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं इनके एफिनिटी होती है और ये डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. नाउ रिजेम्बलेंस विद हेलोजन्स. हेलोजन के साथ इनकी समानता. इलेक्ट्रॉन दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन और हेलोजन इसमें वन इलेक्ट्रॉन कम होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से. दे बोथ हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द inert gas configuration, and ionization energy of the hydrogen is almost similar to halogens. Hydrogen as well as halogens are diatomic in nature. जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हेलोजेंस और हाइड्रोजन की वो ऑलमोस्ट सेम होती है, एंड दे बोथ फॉर्म ये दोनों ही डाई एटॉमिक होते हैं नेचर में. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं जैसे H2, Cl2, F2 एट्सेट्रा. मैनी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजेंस आर ऑफ कोवेलेंट नेचर. मोस्टली जो हाइड्रोजन और हेलोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं. फॉर एग्जांपल CH4, CCl4, SiCl4 एट्सेट्रा. Now we come to the next topic, occurrence of hydrogen. Hydrogen is the most abundant element in the universe, and it is present in the combined state as water, coal, animal and vegetable matter, etc., and all organic compounds contain hydrogen as an essential constituent. हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में जो है कोल में एंड डिफरेंट कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, एंड मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. नाउ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. आइसोटोप मीन्स कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number but different atomic mass, and hydrogen has 3 isotopes. Protium, in this H11, deuterium H12,
एंड ट्राइटियम H13। इसमें सभी में एटॉमिक नंबर सेम है, बट द मास नंबर is 1, 2 and 3 respectively, and tritium is the radioactive isotope of hydrogen. Now when hydrogen combines with other elements and it form hydrides. So next topic is hydrides. Hydrides are the binary compounds of hydrogen. ये हाइड्रोजन के साथ जब कोई एलिमेंट कंबाइन होता है, then the compound formed is known as hydrides. The hydrides are classified into 3 types. 3 तरह के hydrides होते हैं. First, the ionic or saline hydrides. Saline hydrides, they are also the salt-like hydrides. Now, the hydrides of hydrogen formed by the combination of hydrogen with the electropositive elements of group number 1 and 2 are called ionic hydrides, and they are the stoichiometric compounds. Now, properties of ionic hydrides. The ionic hydrides are lighter elements like lithium, beryllium, मैग्नीशियम एट्सेट्रा. आयनिक हाइड्राइड्स जो है लाइट एलिमेंट्स जैसे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम आदि के साथ हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. एंड दे आर लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड होते हैं दे आर मोस्टली शो कोवेलेंट कैरेक्टर्स. द आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन द सॉलिड स्टेट. ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, एंड नॉन वॉलेटाइल होते हैं एंड क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन. इन एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं. नाउ कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. The binary compounds of hydrogen with known metals belonging to p block. p block elements के साथ जो हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं they are known as covalent or molecular hydrides. For example, ammonia, methane, water, hydrogen fluoride, etc. And they are mostly volatile compounds and with low boiling points, and they are further classified into 3 categories. Number 1, electron deficient molecular hydrides. The molecular hydrides in which the central atom does not have octet are called electron deficient hydrides. वो hydrides जिसमें कि सेंट्रल एटम के अराउंड 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो उनको हम मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिकुलर हाइड्राइड्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल BH3, MgH2 एंड BeH2. फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड BH3, because boron belongs to group number 13 and it has 3 electrons in the outermost orbit, और 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो बोरोन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. एंड इट नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स वो होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड 8 electrons होते हैं, and these hydrides are formed by combination of hydrogen with 14 group elements. And for example methane, because in methane में कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 4 हाइड्रोजन से जब इसका कॉम्बिनेशन होता है देन द सेंट्रल एटम कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं.
And next type of hydrides, they are electron rich hydrides. जो electron rich, it means कि around the central atom in hydrides more than 8 electrons are present. These metal hydrides which contain lone pair of electron are called electron rich hydride. और इनमें एक लोन पेयर, एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, वाटर, H2S, HF एट्सेट्रा. एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया NH3 एंड नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15 और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं. और जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, 3 हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं. एंड एंड 1 लोन पेयर इज ऑल्सो देयर. 8 इलेक्ट्रॉन होती है, 6 की बॉन्डिंग एंड 1 लोन पेयर. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ वाटर, वाटर में H2O ऑक्सीजन combines with the 2 hydrogen and 2 lone pairs are present on the oxygen. And so next is metallic or non-stoichiometric hydrides. These hydrides are also known as interstitial hydrides because transition metals of group 3, 4, 5 form metallic hydrides. In group 6, chromium alone has the tendency to form CrH, but the metals of 7, 8 and 9 group do not form the hydrides, and this is called the hydride gap. And in these hydrides, the stoichiometry is not present and hydrogen is present in the lesser amount, and so that these are known as non-stoichiometric hydrides or metallic hydrides. For example, LiH 2.8 or cesium hydride CeH 2.7. So stoichiometry is not present. Now these hydrides have metallic locks and their properties are closely related to those of the parent metal. इसमें जो हाइड्राइड्स होते हैं उसमें मेटालिक लॉक्स, आपस में मेटल्स जो है वो अटैच रहते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स. एंड जो पेरेंट मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट रहती हैं. दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स and in most of the cases due to presence of free hydrogen atom in the metal lattice. And now we come to the next topic, water. Water is very important compound and it is the universal solvent, and human body has about 65% water, and but some plants have about 95% water. Now physical properties of water. The freezing point of water is 273.15 Kelvin and boiling point is 373.15 Kelvin. The maximum density of water is at 4 degrees Celsius, that is 1 gram per centimeter cube. It is colorless, tasteless liquid, and due to hydrogen bonding with polar molecules, even covalent compounds like alcohol, carbohydrate, they dissolve in water. Structure of water. In gas phase, it has a bent molecule with HOH bond and bond angle 104.5 degree, and
OH bond length is 95.7 pm. It is highly polar in nature and its orbital overlap picture is shown in the diagram. Now, uses of hydrogen peroxide. It is also important compound of hydrogen and it is used as mild disinfectant and it is marketed as the perhydrol as antiseptic. It is used in the manufacturing of high quality detergents and also synthesis of hydroquinone and tartaric acid, etc. It is used as the bleaching agent for textile and paper industry. It is used for pollution control treatment for the domestic and the industrial effluents. Now the next topic is heavy water. Heavy water is D2O and D is the heavy hydrogen, that is the H12 यानी कि इसका जो मास नंबर है वो 2 होता है and D2O is the heavy water. It is used in the preparation of other deuterium compounds and it is also used in the nuclear reactors. Now hydrogen as a fuel. Hydrogen economy. The basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of energy in the form of liquid or the gaseous dihydrogen. जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है ये इस पर डिपेंड करती है कि जो एनर्जी है, जो फ्यूल है, उसको हम लिक्विड स्टेट पे उसको स्टोर करना एंड उसका ट्रांसपोर्टेशन. And because advantage is that energy is transmitted in the form of dihydrogen, not in the electric power. And ये जो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, it is mixed with 5% of dihydrogen mixed with CNG is used in the four-wheelers also, and because it is cheap and pollution free fuel, so the efforts make. Yes, now it is all about today, and please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you students for watching my video.